नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री के केरल दौरे का दूसरा दिन है। इस वक्त प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ഇതാ കേരളത്തിന് മറ്റൊരു ചരിത്ര നിമിഷം കൂടി. കേരളത്തിന്റെ റെയിൽ ഗതാഗത ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ നാഴികക്കല്ലായി മാറുന്ന ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്ന വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഇതാ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. We wish all those in the train a very happy, safe and memorable journey. हम उम्मीद करते हैं कि आज के वंदे भारत के यात्रियों की यह यात्रा कुशल, सुरक्षित और स्मरणीय रहे. Vande Bharat Express is the first train completely designed and manufactured in India at the ICF facility Chennai, and is fully air-conditioned, semi-high-speed train made with state-of-the-art technology to ensure a safe and comfortable ride with modern passenger amenities. The coaches are designed to be friendly for the young generation with amenities like onboard infotainment service, GPS-based passenger information system, onboard mini pantry, ergonomic seating, etc. The unique feature of this train is the emergency talkback unit, through which a passenger can communicate with the train's crew in case of an emergency. Each coach is equipped with CCTV cameras and fire and smoke detector systems for safety and security. This premium service will offer faster connectivity between southern and northern Kerala with a maximum speed of 160 kilometers per hour. Thiruvananthapuram, Kasaragod, Thiruvananthapuram Vande Bharat will become the fastest in the corridor. We would like to extend our heartfelt thanks and express our immense happiness to our Honorable Prime Minister for sparing his valuable time to be here with us and flagging off the prestigious Vande Bharat Express train to Kasaragod. माननीय प्रधानमंत्री जी को हम आभार प्रकट करते हैं कि वे अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे बीच में आए और अपने कर कमलों द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी का उद्घाटन किया.